Koshikji. Today, Sahitya Akademy's Foundation Day. We have completed 68 years, and all the writers representing whole India are with us. So, Sahitya Akademy, we have a slogan called Sahitya Akademy is a writer's home. So, it's a very auspicious day for us. All the writers are with us today, and it's a great celebration for the Sahitya Akademy. Whole day we will celebrate, of course, with all of you. Yesterday I have already introduced our Vice President. Is a very eminent poet in Hindi. He has written more than 25 books and also received a number of awards. So we have 22 award winners are going to speak. In the up to 1:30 or 2 o'clock, this session has to be completed. So I request all the award winners to speak briefly, because the speech we have already distributed. To speak briefly 5 to 6 or 7 minutes maximum, because the rest of the things it is already there, and the audience can read, and they can take and they can read. So kindly maintain the time, discipline. Now I will hand over the mic to Sri Madhav Koshikji, Vice President Sahitya. हेलो थैंक यू डॉक्टर साहब। सभी अवार्ड विनर साहित्यकारों का हार्दिक अभिवादन अभिनंदन। हर साल सम्मान समारोह के बाद हम ये सेशन जब करते हैं तो ये बड़ा एक तरह से सबसे ज़्यादा प्रभावशाली भी होता है और असर भी डालता है सुनने वालों पे, और लेखक एक दूसरे की वो जो क्रिएटिव जर्नी है उससे गुजरते हुए बड़ा अच्छा लगता है। तो आपके जितने लेक्चर्स हैं हमारे पास हैं, जैसे राव साहब ने कहा कि अपनी बात 5-6 मिनट में ख़त्म करेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात ये भी है, अंग्रेजी में जैसे कहावत है, ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट। तो ज़्यादा बड़े भी नहीं है लेक्चर, मैंने सबने देख लिए। जिन मित्रों के बड़े हैं वो अपने अंश छाट ले जो उन्होंने बोलने हैं। मैं अब बगैर ज़्यादा समय लेते हुए नाउ आई रिक्वेस्ट अनुराधा शर्मा पुजारी, Assamese award winner author, to please come on dais and say about his creative journey. Anuradha. Good morning, everybody. Honorable Vice President and distinguished guests. First of all, I am very much thankful to Sahitya Academy for selecting my book for the award, Yak Ekhon Oranyasi. There was a forest. So I now going to say about my book. A few lines about awarded book, Yak Ekhon Oranyasi. My 12th fictional work, there is an error, 9. My 12th fictional work in Assamese is a plaintive story of a situation as to how humans gradually destroy and exploit nature in an unprecedented scale through months, through years. It also surveys how nature and all forms of its biospaces meet their doom, gradually losing atmosphere of happy living and enhancement of time. The setting or plot of the work is based on wildlife sanctuary, and that is Amchang Wildlife Sanctuary, a nature hub with rare birds and animals on the eastern fringe of Assam Guwahati. It was a fortunate moment for our family that years back, 2005, we came to start our habitation here at a point that is very close to the sanctuary. Actually, we learned a lot about nature and human habitation from our forefathers, and I too personally was
enthused to wonders and marvels of nature since childhood, and perhaps that is the reason our family prefer to stay here, very close to the sanctuary. Since I speak on my latest fiction, I must have to remember how I came to get acquainted with the greenery nature spot as if a neighbor at close proximity of my residence. I still remember birds, animals and all other wild species in their scenic green kingdom led a happy-go-lucky life. They became, as I witnessed, extremely happy and made me too, the same days after days and year after year. But gradually, everything starts terribly cheesy to our surprise. The sorry state of affairs is wildlife sanctuary begins losing its tranquility day by day. Gross human enforcement, fatal distraction to trees, and many more occupational attempts bring a crisis to its birds and animals. Modern concrete structures gradually hide down the beauty of the land. Anyway, this situation makes me frequently fancy, and I finally work on this fiction to memorize the great green of this wildlife sanctuary and also to expose human intervention in nature. I am glad to inform you that the characters drawn for the work are most realistic and real. I frequently meet them in this greening age. Not sure I could better add thoughts to glory's literary periphery, but yet I do nature always attempt to pin down my feelings over life and reality during the last 23 or so years. Basically and consistently, I try to paint bygone days, relying on various life experience and various situations. I'm not sure, seriously aware of any uprising literary movement at moments when I resort to my pain for fiction or non-fiction, as I believe my psyche knows how to better speak of man and world. Since childhood, I enjoy liberty and merrymakings, of course, socially connected. And I started naturally observing men and their deeds. I had then opportunities to see things in physical environment, that nature is a teacher for human beings, and I understood it since my childhood. Basically, I took my pain after my 30, at a time when I completed my normal education and simultaneously gathered experiences getting interact on state journalism. I consider at the earth and equality man both with external and internal gauge. Last few years, I'm shaken by current odds and socio-political as well as eco-cultural heritage. I am also sad knowing present human predicament and the modern life system, I'm sure, owns gradually our state of wellness. Human relationships, encompassing husband-wife tie, collapses owing to wrong ways of living for various reasons best known to all of us. Man-made havoc in environmental affairs makes our life unhappy. So there are perhaps my concentration as available in all my phases of creativity. I do always try to, alongside, advocate for a better living and do desire to leave a mark of optimism for the upcoming generation. Literature, I believe, is an art to store around a box of ideas for better living. And this is my ultimate aim.
I sincerely try to work for humanity, either in my fictional and non-fictional works, gathering ideas from my experience. Thank you very much. Thank you, Anuradha ji. Now I request Bangla award winner Bratya Basu. Perhaps he is not here. I request Moda Gahai Bodo award winner to please. Very good morning, everybody. Before going to my speech, I'll take the opportunity Remove it. Remove. Ricardo. to offer our respected chair, or Bodo Adonai, which is most respected in our society. I take this opportunity to offer my little moment to you, sir. Wow. Respected chair and respected dignitaries and our fellow Academy Award winners. I feel immense pleasure being able to participate here as one of the Sahitya Academy awardees. Congratulations, dear all award winners, for your success in creation of good quality literature, and do hope for creation of more and more books in different genres. The name of my book, which was selected for the Academy Award, is Foro Sayo Arhimal. Here, my dear friend, ARE, it is not correct. ARW, it should be DR. I tried to remove it, but it came again and again. Not W, not E, it is W. Foro Sayo Arhimal. Another Himalaya overhead. There are total 106 poems published in 2019 by Sergio Publication, Guwahati. It is my 8th poetry book. I have not so much publication books in my account, in total till date 9 only. I like to write many poems. The themes of my poem are multifaceted. My land and its surroundings, environments are the sources of my creation. I love my hills, trees, boulders, birds and animals. I love rivers, rivulets, sands and dals. Butterflies and creepers are in my bosom. My fields of cultivation for various plants and vegetables, part and parcel of my life. I like people and struggles for livelihood. All the pictures always hit my mind. My mind wants to capture the different incidents in the form of poetry. The gun and bullet culture is also with us. This seem only fire, smoke and ash. Sometimes this kind of subject embraces my creation. Anyhow, I can live with my people without their love and care. Live alone is not possible for me. I have been living with the cover of blessings showered by them only. I have never seen the great good or cottage.
not fail even their presence, but my people with all their properties have been with me. Thanks to them from all of my heart. In this auspicious occasion, I thank Honorable President, respected Secretary of Sahitya Academy for giving me chance to get introduced myself with you and other award winner friends of different languages and different genres. Special thanks to the jury for the selection of a book for the purpose. Again, thanks a lot to respected jury members for their wise selection of my poetry book for Sahitya Academy Award. Thanking you again. Yes, I am a poet. What I have written in my poetry book selected for the Academy Award. From that, I read one poem, and if time allows me, I read one next poem. Thank you, sir. The Freedom. It is included in my poetry books selected for the award. Udang Sri. In Bodo, Udang Sri. The Freedom. The Freedom. The Freedom, it signifies its name. It has address with beautiful map. Pride with the sweet old. No wrinkle of aging, exuberant and hard. But for someone, it is loathing. Intolerant, echoing word. They say, with a saddened heart, this freedom is not for the downtrodden, not for the people who came out seriously to fight, and not for the people riddled with bullets, not to those who hang to death, not for those poorest of the poor, conspiracy to cut the motherland in pieces, to be lured in each part, and sitting comfortably on the part, with the intention of bad game plan to exploit and to suck the red flowing blood, the salty sahab only, to avail the chance of theft. Common people are far behind. This is the freedom. Concluded. Thanks, Modai. Now I request Raj Rahi ji, Dogri Award winner, please come on guys. आदरणीय सभाध्यक्ष और इस कार्यक्रम में मौजूद पूरे वर्ष के साहित्यकार साथियों, महानुभावों तथा साहित्य प्रेमियों, आप सभी को डोगरी भाषा के इस छोटे से कहानीकार का नमस्कार। मैं राजराही निवासी जिला रियासी जम्मू कश्मीर अपनी मातृभाषा डोगरी का छोटा सा सेवक संपूर्ण भारत के महाअनुभावों के बीच में अपने आप को पाकर अपने आप में गर्व महसूस कर रहा हूँ। इतने बड़े और सुंदर कार्यक्रम में मेरे जैसे अदना कहानीकार की मौजूदगी के लिए मैं साहित्य अकादमी का नई दिल्ली का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। साहित्य प्रेमी साथियों, अपने वर्षों के साहित्यिक सफर में मैंने बहुत कुछ लिखा, परंतु एक बात मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। मैंने जो भी लिखा उसके बारे में जब भी मुझे बोलने के लिए कहा जाता है तो वह क्षण मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल क्षणों में आ जाता है। मैं कहानी लिखता हूँ, कहानी पढ़ता हूँ, कहानी में जीता हूँ, परंतु कहानी के बारे में कभी भी कुछ बोल नहीं सकता। बरस 1976 से जब मैंने
आप अब तक मैंने 6 कहानी संग्रह रचे हैं। मेरी इन कहानियों में कौन सा रंग है, कौन सा बाद है, कौन सी समस्याएं हैं, कौन सी शैली है, ये सब बातें मेरे लिए कोई खास मायने नहीं रखती, क्योंकि मैं जिंदगी में वाद और विवाद दोनों से बचने की कोशिश करता हूँ। जो कुछ भी जीवन में देखा है, भोगा है, महसूस किया है, बस वही लिख दिया। अपने 35 वर्षों के इस साहित्यिक सफर के बावजूद भी आज भी मुझे ये लगता है कि वर्तमान समय में मैं भी कहानी लिखने के लिए ना तो मेरे पास विषयों की कमी है और ना ही समस्याओं की, मगर फिर भी आज भी मुझे कमी महसूस होती है। तो वह कमी है उन शब्दों की जो मैं ऐसे मौके पर बोल सकूं। जब मुझे अपने साहित्यिक सफर के बारे में कुछ कहना पड़े या अपनी कहानी के बारे में कुछ बताना पड़े, ये मेरा निजी तौर पर मानना है कि दुनिया के किसी भी भाषा के साहित्यकार को साहित्य की रचना करते समय एक बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि आम आदमी साहित्य पढ़े ना पढ़े, परंतु साहित्य सृजन का केंद्र आम आदमी ही रहना चाहिए। प्रेम, भाईचारा, मनुष्य के द्वारा शोषण, खोखले विकास के नाम पर प्राकृतिक साधनों व संसाधनों की लूट, इंसान में कम होती इंसानियत, एक देश द्वारा दूसरे देश के ऊपर आक्रमण, लड़ाई और जंग इत्यादि से होते हालात तथा उन हालातों का आम आदमी के सामाजिक और आर्थिक जीवन में प्रभाव, आदमी के तथाकथित विकास पर शोक मनाती नदियाँ, पहाड़ तथा जंगलों की व्यथा को मैं अपनी कहानी में कलमबंद करने की लालसा मेरे मन में हमेशा से रहती है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि हमारे मन में क्या विचार आता है, महत्वपूर्ण ये है कि हमारे मन में जो आता है क्या हम उसे कलमबंद कर पाते हैं या नहीं। अपने 6 कहानी संग्रह को लिखने के बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है बहुत कुछ है जो मैं कर सकता हूँ और बहुत कुछ है जो मुझे करना चाहिए और करना ही होगा। डोगरी भाषा में शिरोमणि का इम्तिहान देते समय मैंने अपनी पहली कहानी को रचा था, जिसे पढ़ने के बाद भाषा के एक प्रसिद्ध साहित्यकार हमारे विद्वान ओम स्वामी जी ने मुझे प्रोत्साहित करते हुए कहा था, राजकुमार शर्मा, मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर एक कहानीकार बनने के सारे गुण मौजूद हैं, बस तुम एक कोशिश करके देखो, मेरा पूरा विश्वास है तुम ये कर सकते हो। श्री ओम गोस्वामी जी के ये शब्द मेरे जीवन में साहित्य सृजन का बीज साबित हुए। मैंने प्रयास किया तो राजकुमार शर्मा से कहानी का राय वही निकल पड़ा। इसके पश्चात कहानियाँ लिखने लगा। डोगरी साहित्य में जिंदा शहीद नाम से मेरी पहली पुस्तक 2002 के दशक में प्रकाशित करवा सका। जिंदा शीर नाम की कहानी मेरी सबसे प्रिय कहानी में से एक है। इस कहानी में मेरा पात्र भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत की जीत के बाद अपनी जान बचाकर मेडल तो प्राप्त कर लेता है, परंतु गोली लगने के कारण अपना पुरस्कार गवा देता है। सफाई के लिए युद्ध में जीत एवं सेना मेडल बहुत मायने रखता है, परंतु जब उसकी घरवाली उसको ये कहकर छोड़ देने को तैयार हो जाती है कि बाकियों के पति तो मरकर शहीद हुए, मेरा पति तो जिंदा शहीद हुआ। मैं जिंदा शहीद का क्या करूं, क्योंकि मैं भारत के सीमावर्ती राज्य जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूं, इसलिए भारत पाक युद्ध के हालात से सीमावर्ती लोगों को जीवन में उपजी हुई परिस्थितियाँ, राजस्थान में मरते लोग, आतंकवाद तथा अपना घर होते हुए भी शरणार्थी कैंपों में बसे लोगों का चित्रण बहुत ही संभावित है। डोगरी भाषा क्योंकि जम्मू कश्मीर के एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है, जिसमें पाठक वर्ग की संख्या भारत में बोली जाने वाली दूसरी भाषाओं के मुकाबले बहुत कम है, परंतु मैं अपने आप को समझ रहा हूँ कि मुट्ठी भर लोगों की प्रेम की वजह से मैं साहित्य अकादमी जैसी राष्ट्रीय सत्र के संस्था में अपने मातृभाषा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। आज का ये कार्यक्रम शायद वह कार्यक्रम होगा इसका हिस्सा बनने का सपना पूरे भारत की हर भाषा का साहित्यकार देखता है।
मुझे गर्व है अपनी भाषा पर और डोगरी के उन साहित्यकारों पर जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी डोगरी भाषा में साहित्य सिर्जना का कार्य को एक सदी पहले शुरू किया था। आज उन्हीं के अथक प्रयासों की वजह से डोगरी भाषा संविधान के 8वें शेड्यूल में शामिल हुई है, जिसके फलस्वरूप मेरे ऐसे आम नागरिक को ये यश और सम्मान प्राप्त हुआ है, जिसको हासिल करना तो दूर बल्कि मैं तो इसकी कल्पना तक नहीं कर सकता था। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, डोगरी के प्रसिद्ध साहित्यकारों के अनुसार, मेरे बारे में जो उन्होंने साहित्यकारों ने बोला है वो क्लब करके लिखा हुआ है मैंने, अनुसार राज राजे की कहानियों में पिछले 4 दशकों के भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों का भरपूर चित्रण देखा जा सकता है। 1985 के दशक से प्रकाशित हो रही उनकी कहानियों में आम आदमी के जीवन के सभी रंगों का चित्रण मिलता है। क्योंकि राज राही जी भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से हैं, इसलिए भारत पाकिस्तान के युद्ध तथा आम सिपाही और उसके परिवार पर युद्ध जैसी सार्वभौमिक समस्याओं का असर का चित्रण उनकी कहानियों में देखा जा सकता है। कहानी में परिस्थितियों में संघर्ष के कारण पात्रों की मानसिकता में उपजे संघर्ष को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। हाशिया पर खड़े आम आदमी का दर्द, वेदना, उदासीनता का वो राय राही जी अपनी कहानियों में बड़े ही सुंदर तरीके से चित्रित करते हैं। उनकी कहानियों के पात्र किसी भी पाठक के इर्द गिर्द के आदमियों जैसे सजीव और यथार्थ को बोलते हुए आम इंसानों की तरह दिखाई देते हैं। कहानी का प्रस्तुतिकरण इतनी खूबसूरती से होता है कि हर पाठक को राय राही जी की कहानी में अपनी कहानी दिखाई पड़ती है। मैं एक बार फिर अपने मन की गहराइयों से अपने डुग्गर प्रदेश, डोगरा और डोगरी तीनों का आभार व्यक्त करते हुए साहित्य अकादमी नई दिल्ली का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इतने भव्य कार्यक्रम में मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया है। दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय डुग्गर, जय डोगरी, जय जम्मू कश्मीर। धन्यवाद राज राय जी। Before I invite the next author, I welcome Professor Chandrasekhar Kambal ji, the President of Sahitya Academy, is with us. One of the greatest authors of our times, sir. The next award winner author is Namita Gokhale. She couldn't attend it, but she sent us a video. We will play that. I'm I'm grateful and indeed overwhelmed by this honor conferred on me. It is a privilege and a joy to be here today with eminent writers, friends and colleagues at the Sahitya Academy, even though only virtually. My novel, Things to Leave Behind, was selected for this distinguished award for 2021. I would like to talk about the book and place it in the context of my writing practice and beliefs. The title of my novel, A Himalayan Love Story, looks at women in terms of their individual strength and social vulnerability. It also foregrounds the theme of mental illness and societal responses to it. The Book of Shadows is set against the colonial history of Kumaon and the barbaric tyrannies perpetuated in its name. It also looks at the magical and mystical aspects of the Himalayas, of the seekers who came in search of enlightenment, and the betrayals of faith that happened in the deluded path of instant nirvana. The third novel in this trilogy is Things to Leave Behind. It has been described as the most ambitious of my novels, and indeed, its scope is wider than any of my other works. It examines the history of Kumaon from approximately 1840 to 1912, following the story of several strong women as they grapple with the winds of change and the emergence of a fragile new modernity
one that is still under challenge today. One of the principal characters, the eccentric and free-spirited Tilottama, searches ways and strategies to evade the strict Brahmanical codes that so rigidly restricted the lives of women. She learns to read in Hindi, in some Sanskrit, then English. In the course of the narrative, I have highlighted some of the books and periodicals that were the vehicles and vectors of change, as well as ancient texts. There is material from the Puranas, including the Manaskand from the Skanda Purana, because Kumar was the Manaskand, Garhwal the Kedarkhand. There is also the Garud Purana and the Shiv Tandav Stotra. I also reference Atkinson's Himalayan Gazetteer and Wanderings in the Himalayas by Pilgrim, P. Ballard. There is a lot around the Bible, including Bishop Heber's multiple translations. I reference Pandita Ramabai, Charles Darwin, Rudyard Kipling, Chandrakanta by Devakinandan Khatri, Michael Madhusudan Dutt, and Sarojini Naidu, among others. I have also drawn on Kumar Ka Itihas by my great-grandfather Badridat Pandey, who was an inspiration for this book. In this way, I tried to locate the intellectual and social environment and the changes it triggered, as well as the evolving concepts of modernity through the books people were reading and the ideas, many of them disruptive, then in circulation. Let me amuse you with the actual backstory of how I stumbled on the title for this novel, the evocative Things to Leave Behind. I was in Bellagio, in Italy, for a residency with my friend Dr. Madhusri Lal. As I was packing for my return home, I discovered that the odds and ends I had accumulated during that short February spent by the banks of Lake Como could no longer be fitted into my suitcase. So I spread my belongings, clothes and socks and books and papers and the cuckoo clock I had impulsively purchased, and laid them out on the bed. Then I made out a list of non-essentials, which I labeled Things to Leave Behind. The phrase remained with me and became the title of my book. We are going to take stock, to make that list, sometime when we can, or when indeed we must. The pandemic and the lockdown, the days before the uncertain dawn of day after tomorrow, are as good a time as any. Thank you. Thank you, Namita. Now I request Gujarati Award winner Yagesh Daveji. From the chaos of the word and words, poet gives a group. In that sense, poet is a Rupankar, creator of forms, intertwined with the meaning and feeling, rational and emotional halves of our consciousness. A Sanskrit text describes Kalakar as a apare kavya sansare kavire kah prajapati yathasmai rochate vishwam tatha vai parivartate. In the boundless world of poetry, Prajapati Brahma is the only poet. He changes the universe as and when he thinks best. At the onset, with my great reverence, I would like to bow my head to all the past and present writers of the world who have paved the way for us and whose work still resonates in our being. Let me make it clear that in my ancestry, no one was a poet or an artist. But my grandfather and my father had a good home library, and that gave me a chance to peep into the world of literature and letters. My whole family is an ardent reader. In that way, I have been nurtured in a very congenial milieu.
and through books I received extra genetic inheritance of the humankind. I was not a student of a Gujarati language or literature. I did my MSc in experimental biology and my PhD in ecology. My background in science field gave me a rational attitude, analytical mind, holistic approach, which led me to write a long prose poem. My poetry has its roots in mythology, culture, history, and science. New interpretation of mythological characters, fresh imagery, juxtaposition of our present and past times, elusiveness, and rarely dealt science subjects like genetics and human evolution are few salient features of my long poems. Well-known French poet FOL-2022 says, "There is another world, but it is in this world." Mother Earth, Prithvi, is the only living planet among innumerable planets, stars, nebulas, and galaxies. Mother Earth is a mother of lakhs of plants and animal species, including human beings. But among all human living creatures, only our species, Homo sapien, is endowed with the faculty of a language, higher consciousness. So it is a duty of the poet to give voice to the sorrows and joys, plight and flight, desperation and aspiration, not only personal and societal, but to all living things, our fellow creatures, and Mother Earth itself too. No language is inferior or superior. No subject is a mundane or sublime. I sincerely thank Sahitya Akademi and panel of jury for recognizing my work for the prestigious award. In more than a 4.5 decades of my creative journey, this award will give me a further impetus to write more and more. With this happy note, आप बैठ के बोलना चाहेंगे क्या? नहीं तो मैं कुर्सी लगवा देता हूँ। सर साहित्यकार बंधु, पूरे देश से आए साहित्यकार बंधु, इस साल साहित्य अकादमी ने पहली बार, बिल्कुल पहली बार नाटक को साहित्य अकादमी पुरस्कार एक जगह का नाटक एक दुई आयामी विधा है। नाटक साहित्य भी है और नाटक कला भी। जब नाटक लिखा जाता है तो मूल रूप से वो साहित्य होता है और उसका मूल्यांकन भी साहित्य के रूप में किया जाना चाहिए। लेकिन जब वो मंचस्थ होता है तो एक परफॉर्मिंग आर्ट बन जाता है और उसका एलिवेशन प्रेक्षक करते हैं, समीक्षक करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही श्रेष्ठ नाटक हिंदी में लिखा जाए तो साहित्य के बिंदु से भरपूर बहुत ही श्रेष्ठ समीक्षक से बड़ी प्रशंसा करें, मगर वो इसमें असफल हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कोई नाटक रंगमंच पर बहुत सफल होता है, बहुत शोर होता है, खूब लोगों को बांधता है, मनोरंजन करता है, लेकिन जब उसकी साहित्य पढ़ा जाए, उसका नाटक पढ़ा जाए तो लगता है क्या है, वो तो सीरीज ऑफ जोक्स से उसने जोड़ दिया है, दर्शकों को मनोरंजन कर दिया है। तो श्रेष्ठ नाटक क्या है? मेरी दृष्टि में श्रेष्ठ नाटक वो है जो साहित्य के मूल्यों से और साथ ही मंचस्थ उतनी सफलता से लिए जा सके। जैसे शेक्सपियर का नाटक समय बताता है कि वो कैसे नाटक है,
और जो नाटक जो श्रेष्ठ नाटक होते हैं, मतलब साहित्यगत मूल्यों से भी भरपूर हो और सफलतापूर्वक मंचस्थ हो, ऐसे ही नाटक काल से ही होते हैं। हमारे यहाँ इतिहास में आपको हिंदी का जो नाट्य परिदृश्य है हिंदी भाषा में, वो बहुत ही निराशाजनक है। हमारे यहाँ एक संस्कृत की बड़ी प्रसिद्ध नाट्य प्रसिद्ध परंपरा थी, जिसमें कालिदास थे, शाकुंतल थे, तमाम, मगर 13th सेंचुरी में वो परंपरा संस्कृत नाटकों की परंपरा समाप्त हो गई। कारण स्पष्ट है, क्योंकि इस्लामिक शासन के भीतर संगीत, नृत्य और नाटक हराम, ये नहीं करे जा सकते, इससे समाप्त हुई। लेकिन संगीत किसी प्रकार से बच रहा है। संगीत इसलिए कि जो शासक थे, मुस्लिम शासक थे, वो संगीत का आनंद लेते थे, मगर वो प्राइवेट में लेते थे। जनता में संगीत का प्रचार निषिद्ध था, उसके बावजूद भी संगीत बच रहा है, क्योंकि दूर गांव में, सुदूर वन प्रांत में, मंदिरों में अष्टयाम की आरती गाई जाती थी। अष्टयाम की आरती शास्त्रीय संगीत में होती थी, तो अष्टयाम के माध्यम से अष्टयाम गायन से शास्त्रीय संगीत बच रहा है। नृत्य कैसे बचा? नृत्य विषयों के कोटे बच रहा है, जिसका कि रिवाइवल 20th सेंचुरी या 20th सेंचुरी में अंग्रेज जब आए, जब रिवाइवल हुआ, पुनर्जागरण कहते हैं, जिसके इंडियंस में पानी के 19th सेंचुरी भारतीय इतिहास में रेनेसां का काल, इस काल में पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। इवेल्यूशन में हमारी पुरानी परंपराओं का और नए सुधारकों ने जन्म लिया और भारत की संस्कृति में नई दिशा ली। लेकिन नाटक नहीं बच रहा, नृत्य बच रहा, गायन बच रहा, संगीत बच रहा, लेकिन नाटक नहीं बच सका, क्योंकि एक सामूहिक कला है। नाटक के लिए, नाटक मंचन के लिए प्रेक्षक का होना आवश्यक है, इसलिए नाटक के लिए प्रेक्षक अविभाज्य है। अगर प्रेक्षक नहीं है तो नाटक नहीं है, लेकिन इसलिए सामूहिक कला है, ये नहीं बच सका। 1850 के आसपास अंग्रेजों की हिंदुस्तान में जो छावनियाँ होती थी, उसमें वो लोग अपने अंग्रेज सैनिकों के मनोरंजन के लिए इंग्लैंड से शेक्सपियर की थिएटर कंपनियाँ बनाया करती थी। जैसे बंगाली कहीं भी जाता है तो उसके साथ दुर्गा पूजा जाती है, उसी तरह से अंग्रेज कहीं भी जाते थे तो उनके साथ उनका शेक्सपियर जाता था। उन छावनियों में शेक्सपियर के नाटक होते थे। उन छावनियों में कुछ पारसी ठेकेदार, जो कि गल्ला सप्लाई करते थे, फूल के सप्लाई करते थे, गुड़ों की जाया करते थे, उन्होंने पारसी थिएटर और शेक्सपियर के नाटक देखे और उसकी नकल में उन्होंने पारसी थिएटर की स्थापना करीब 1850 ईस्वी में करी। तो पारसी थिएटर, लेकिन वो हमारे जनजीवन से जुड़ा रहता है। पारसी थिएटर में जो थीम्स थे वो ज़्यादातर अरबी और पर्शियन नायक थी, उनकी मैथोलॉजी थी, चमक दमक थी, उनकी भाषा उर्दू और फारसी से बोझिल होती थी। तो वो जो जब उनकी भाषा क्षेत्र में जाते थे, अवधी बोली जाती थी या ब्रज भाषा बोली जाती थी, अन्य भाषाएं जो भारतीय भाषाएं थी उसमें नहीं जाती थी। और पारसी थिएटर किसी भी शहर में 2-3 साल में टूरिंग कंपनी होती थी पारसी थिएटर की, तो 2-3 साल में एक शहर में जाते थे। तो इस तरह पारसी थिएटर का इम्पैक्ट जन साधन पर मिनिमम था, कहीं थिएटर था ही नहीं। उसकी नकल में, पारसी थिएटर की नकल में हमारे कुछ नाटक लिखे गए, जैसे विशेष रूप से जयशंकर प्रसाद जी ने बहुत ही अच्छे नाटक, लेकिन उनके पास मॉडल था पारसी थिएटर।
हिंदी में और कोई मंच नहीं था। पारसी थिएटर का मंच था, उसकी नकल में उन्होंने उस फॉर्मेट में उन्होंने पारसी थिएटर में साथी ने हिंदी के नाटक लिखे। लेकिन पारसी थिएटर जब 1930-32 में टॉकी सिनेमा आ गया, पारसी थिएटर का अंत हो गया, मतलब समाप्त हो गया, उसके अपील खत्म हो गई। तो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो पारसी थिएटर अपना प्रभुत्व, अपना प्रभाव खो चुका था और हिंदी भाषी क्षेत्र में नाटक के परिदृश्य में एक अपूर्व सन्नाटा बिल्कुल सन्नाटा। और उस समय 1952 में पृथ्वी थिएटर की स्थापना हुई। पृथ्वी थिएटर में जो थीम्स थे वो सामान्य जन की भावनाओं से, उनकी समस्याओं से जुड़े हुए थे। उनके नाटक थे पठान, किसान, आहुति, इस तरह के गद्दार, ये नाटक थे। और उस जमाने में जो हिंदू मुस्लिम की समस्या थी, जो पाकिस्तान भाग में ताज़ा बना हुआ था, उन सबको उन्होंने, या फौजीज की समस्या थी या किसानों की समस्या थी, उन्होंने आज के जनजीवन समाज से जुड़ी हुई समस्याओं के नाटक बनाए। और वही हमारे लिए मॉडल था और वही मेरे लिए भी मॉडल था। जब मैंने पहली बार नाटक देखा पृथ्वी थिएटर का, तो मैं अब स्वेट, मुझे लगा कि अरे ये अल्टीमेट है। 17-18 साल की उम्र थी, मैंने भी प्रभावित ही था। तो मैंने घर वालों से कहा कि मैं तो पृथ्वी थिएटर ज्वाइन करने जा रहा हूँ। मैंने वो बचकानी बात थी, मगर वो जो कीड़ा था वो थिएटर का, उससे विमुक्त नहीं हो सकी। थिएटर के संदर्भ में एक शब्द आता है स्टेज स्टक। स्टेज स्टक का मतलब जो स्टेज से तर्कहीन कारणों से एकदम चिपट, इसका मैंने मैथिली में अनुवाद किया है, मंच मुक्त। आप बस थिएटर आप करना चाहते हैं, आप कुछ नहीं करना चाहते, थिएटर से मुक्त। स्टेज स्टक है, म्यूजिक स्टक नहीं होता, पेंटिंग स्टक नहीं होता, लेकिन स्टेज स्टक होता है। तो उसी स्टेज स्टक में मैं था। और फिर मैंने छोटे यूनिवर्सिटी में नाटक किया था, यूनिवर्सिटी यूनियन का मेंबर था, इलेक्शन में जीत गया था। तो मैंने नाटक किया, 18 साल की उम्र थी। मैं लेखक था, मैं निर्देशक था और मैं हीरो भी था। 18 साल की उम्र में यूनियन हॉल में नाटक करा और नाटक थोड़ी चला, 10-15 मिनट, और तभी 20 मिनट चला होगा, तभी बस बोल की आवाज़ आने लगी। तो किसी ने बता दिया, पटाखा बजा दिया और हमको तकलीफ हो गया। मुझे कहना पड़ा बंद करो नाटक या पटा गिराओ, तो मैं चला गया। उसके बाद मैं नाटक की जर्नी के साथ अपनी जर्नी भी बता रहा हूँ। तो उसके बाद फिर उसके बाद थिएटर का शौक बना था। अपने यूनिवर्सिटी में जब मैं नाटक कर रहा था, शायद उसमें 22-23 साल की उम्र थी, तो मेकअप मैन ने कहा, जब मेकअप मेरा पूरा किया तो उसने मुझसे कहा, मिस्टर सिन्हा, मैंने आज आपका मेकअप किया है और मेकअप के जरिए मैंने आपके फिल्म में थिएटर के जर्म्स डाल दिए। ये जर्म्स आपको जिंदगी में परेशान करते रहेंगे और आप कभी थिएटर से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसी तरह से मगर वो वाकई में मैं अनुरोध करता हूँ कि थिएटर से मुक्त नहीं हो सकता। उस 1959 में एक संगीत नाटक अकेडमी ने ड्रामा फेस्टिवल करा था, ऑल इंडिया ड्रामा फेस्टिवल। उसमें मैं कुछ 14 साल का था, तो अपना नाटक लेकर के उसने संगीत नाटक अकेडमी के निमंत्रण पत्र लिया था। तो बहुत ही एक्साइटेड था नाटक लेके और 24-25 साल की उम्र से करने लग गया। मेरा 1960 में जब नेशनल स्कूल ड्रामा की स्थापना हुई तो पहले बैच में मेरा एडमिशन हो गया। उसी साल ब्रिटिश ड्रामा लीग में भी एडमिशन हो गया। उसी साल में कंपटीशन में बैठा था, उसमें भी आया। तो बंगाल के बहुत अच्छे डायरेक्टर हुआ करते थे, शंभू मित्रा।
तो मेरा पास चॉइस थी कि एनएससी ज्वाइन कर लूँ तो लंदन चला गया या नौकरी ज्वाइन कर लूँ, और यूनिवर्सिटी के कॉलेज में लेक्चर भी था उस समय। तो समूह मित्रा जी के पास गया और मैंने कहा बताइए क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, थिएटर इज a leap in dark. One doesn't know when there was a cross, वो सफल होगा या बीच में गिर पाएगा, इसलिए तुम नौकरी ज्वाइन करो। तो मैंने कहा कि दादा आप थिएटर में हैं और मुझसे सलाह दे रही हैं तो मैं थिएटर ज्वाइन करूँ। तो थोड़ी देर तक देखते रहे और बोले देखो भाई, जब मैंने थिएटर ज्वाइन करा था तो किसी से पूछा नहीं था। मुझसे कह रहे थे कि तुम डर करके पूछ करके थिएटर में जाना चाहते हो तो तुम जा लिया करो, तुम कमजोर हो। ये बात सही थी और मैंने नौकरी ज्वाइन करी। मगर जैसा कि हमारे पहले मेकअप मैन ने कहा था कि थिएटर का जब जो आपके ब्लड में है वो नहीं जाएगा, वो नहीं छूटेगा। तो मैं थिएटर एक्टिव थिएटर तो नहीं कर सका, मगर नाटक लिखता रहा, कभी कभी गलत भी करता रहा, कभी कभी एक्टिंग भी करता रहा। ये वही बात है कि कहते ना लागे नहीं छूटे जाए, वो नाटक से निकलना बहुत मुश्किल था। लेकिन हमारे यहाँ जो आज नाटक का परिदृश्य है वो एक अमेच्योर थिएटर, हमारा प्रोफेशनल थिएटर है। मुझे याद है तो 1982 की पत्नी कलकत्ता की थी, तो हम लोग कलकत्ता गए तो हम नाटक देखने गए, उसका नाम था सेतु। उसमें बिजली की इक्विपमेंट वगैरह इतनी अच्छी नहीं थी, राइटिंग इतनी डिफिकल्ट होती थी सेतु में। सेतु में मैंने देखा कि तृप्ति मित्रा जो उसकी हीरोइन थी वो सुसाइड करने जाना चाहते रेलवे ट्रैक के सामने, और ट्रेन आती है, धीरे धीरे उसकी लाइट बढ़ती जाती है और वो सामने ट्रेन के सामने खड़ी हो जाती है, इंजन आ रहा था से इसमें कोई आदमी खींचता है और फिर धर करती निकल गई और उससे लाइट डिब्बों से लाइट गिर रही। तो ये चमत्कार मैंने देखा, वो आज को हिंदी थिएटर में मिलेगा, क्योंकि हमारी हिंदी थिएटर अभी भी अमेच्योर है, अब उस स्टेटस से बढ़ ही नहीं सकती। और जैसे मैंने कहा कि हमारी जो परंपरा नहीं है थिएटर की, जैसे कि बंगाल के थिएटर में, मराठी थिएटर में, कभी कभी तो हिंदी नाटककार मराठी नाटककार को हिंदी का नाटककार करते हैं। पूरा देशपांडे उनका अपना नाटककार है, विजय तेंदुलकर उनका अपना नाटककार है, कंबार जी के नाटक हैं वो हिंदी भरों के लगता है उनके ही नाटक हैं। हमारे यहाँ नाटक लिखने की बड़ी परंपरा है, नाटक की मंचन की बड़ी परंपरा है, उसको हम लोग धीरे धीरे रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कहा मैंने भारत जो हिंदी भाषी प्रदेश में जो नाटक की स्थिति है उसके बारे में अपनी यात्रा के साथ बताने की कोशिश की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिन्हा जी ने पूरा ऐतिहासिक परिदृश्य रखा। नाउ आई रिक्वेस्ट वली मोहम्मद असीर किश्तवारी, Kashmiri award winner, to please come on dais and say about his creation.